Hi guys, very good evening to all of you. I hope I'm perfectly audible and visible. आवाज clearly आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ. Sure. So let's start with today's YouTube live. Now, I am. Yes, I think I am. Just give me a second, please. Okay, perfectly audible and visible. Okay, that's clear. Now, today's YouTube live is very special, but I'll in fact start the YouTube live with a small anecdote, with a small story. Now, 2006 में जब मैंने अपने टाइम पे अपने लॉ एंट्रेंसेस दिए थे, आई रिमेंबर आई हैड टू go to multiple cities and multiple centers to write multiple law entrances. So उस टाइम पे नेशनल लॉ स्कूल सब मिला के 7 थे एंड वो सातों नेशनल लॉ स्कूल्स के भी अपने अपने अलग अलग यूट्यूब अपने अपने अलग अलग एग्जामिनेशन से अपने अलग अलग एंट्रेंसेस थे. सो एनएलआईयू भोपाल का एंट्रेंस भोपाल में हुआ था, नालसार हैदराबाद का एंट्रेंस दिल्ली जाके दिया था, एनएलएस का एंट्रेंस कहीं और हुआ था. ये अलग अलग डेट्स पे थी, ये अलग अलग टाइमिंग पे था, ये अलग अलग पैटर्न पे था. और उस टाइम पे तो पैटर्न में कुछ सब्जेक्टिव भी हुआ करते थे, कुछ ऑब्जेक्टिव भी हुआ करते थे, कहीं जीके आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. 2007 में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड एंड इट वेंट ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था दैट दिस इज एक्सट्रीमली अनफेयर, दिस शुड नॉट बी डन, दिसमें यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एन एस्पिरेंट. और आप बिकॉज बहुत बार क्लैश भी हो जाते हैं एग्जाम डेट, सो दिस इज कंप्लीटली अनफेयर. सो दैट इज वाई 2008 में क्लैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम और तब से लेके अभी तक हो रहा है. इट्स बीन 2022 नाउ. एंड जितने नेशनल लॉ स्कूल बाद में ऐड होते गए वो सब क्लैट के अंदर आते गए, ऑब्वियसली विद द एक्सेप्शन ऑफ एलेट, विद द एक्सेप्शन ऑफ एनएलयू दिल्ली. राइट नाउ 2008 में ये प्रॉब्लम टू एन एक्सटेंड सॉल्व हो गई और तब से लेके काफी टाइम तक ये प्रॉब्लम सॉल्व रही. बट इन द लास्ट फ्यू इयर्स इन अ वे द सेम प्रॉब्लम जो 2006-7 में थी वही प्रॉब्लम एक अलग तरीके से आ गई. So even right now, a lot of law aspirants, they have to run from pillar to post, writing multiple law entrance examinations on multiple patterns at different dates, and उसकी different तरीके से तैयारी होती है. For example, CLAT, for example, ALET. ALET 2008 में स्टार्ट हुआ था. For example, MHCET जो 2016 में स्टार्ट हुआ. For example, SCLAT जो पिछले 10 एक साल में स्टार्ट हुआ. For example, BLAT जो again 2010 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, and so on and so forth. सो ये वाली प्रॉब्लम जो 2008 में सॉल्व हुई थी टू एन एक्सटेंट, 2021 2022 में एस्पिरेंट्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम फॉर द अगेन द सेम प्रॉब्लम दैट इज ऑफ मल्टीपल लॉ एंट्रेंसेस. राइट. और इनफैक्ट रिसेंटली इसी प्रॉब्लम को नेशनल लेवल पे सॉल्व करने के लिए द एनटीए हैज इंट्रोड्यूस्ड द सीयूईटी, which is a common university entrance test, which is for entry into hundreds of central universities of the country and for lakhs of seats. Right, CUET. बट द प्रॉब्लम इज लॉ के डोमेन में ऐसा कुछ नहीं है और सीयूईटी के अंदर लॉ के बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉ स्कूल्स नहीं आते हैं. राइट. So yes, multiple problems which students are facing right now, which is obviously preparing for multiple sections which are often unrelated to each other. मैथमेटिक्स और जीके में फंडामेंटली कोई कनेक्शन नहीं है, लीगल और लॉजिकल में फंडामेंटली कोई कनेक्शन नहीं है, पर इस सब की तैयारी एक लॉ एस्पिरेंट को पूरे साल भर करनी पड़ती है. सो मैं पहले प्रॉब्लम्स बता रहा हूं एंड देन आई कम टू द सोल्यूशन. प्रिपेयरिंग पोर्शंस ऑफ सेक्शन व्हिच मे नॉट कम इन सम एंट्रेंसेस. स्टैटिक जीके कहीं आता है कहीं नहीं आता है, क्रिटिकल रीजनिंग पैराग्राफ बेस्ड कहीं आता है कहीं नहीं आता है, एनालिटिकल रीजनिंग कहीं आता है कहीं नहीं आता है. तो बहुत सारी, तो अल्टीमेटली अ स्टूडेंट एंड्स अप प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, क्योंकि हो सकता है उसका एक पोर्शन हो जो कहीं आ रहा हो बट कहीं पे नहीं आ रहा हो, पर वो छोटे से एग्जामिनेशन में आ रहा है और मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ रही है. राइट. सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम व्हिच एन एस्पिरेंट फेसेस, व्हिच स्पेसिफिकली अ लॉ एस्पिरेंट फेसेस. मल्टीपल एग्जाम्स, मल्टीपल डेज एंड लॉट ऑफ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड. और ये आप लोगों के साथ जून में काफी ज्यादा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंसेस जून में आप लोग लिखने वाले हो. राइट. Extremely high application form fees. An average aspirant ends up paying, I think, close to 10, 15, 20,000 just for the application forms. ये मैं काउंसलिंग और इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ. Just for the application forms, we end up paying this amount, right? And results often come very late. Notable examples, MHCET. एग्जामिनेशन कराने में काफी जल्दी एग्जामिनेशन MHCET कराता है बट रिजल्ट्स बहुत बार बहुत महीनों बाद आते हैं. पूरा काउंसलिंग बहुत
पिछले बार MHCT का काउंसलिंग दिसंबर जैन तक चलता रहा था. So there were students जो उतने लेट तक भी वेट करते रहे थे for getting the college of their choice. So this is the problem जो हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट कुछ सालों से नोटिस किया था. We are working on that silently, at least since the last few months. And today we're announcing the solution which Legal Edge Top Rankers has come up with to solve this problem. And the solution is LEOne. So LEOne will be a common examination for entry into hundreds of colleges, hundreds of private law schools. पूरा थीम जिस पे LE1 बना है is one career which is law. अगर मैं सिर्फ एक करियर की तैयारी कर रहा हूँ, so I should only be writing one examination उस करियर में जाने के लिए, which should be on a singular pattern. मुझे अलग अलग पैटर्न्स पे अलग अलग तरीके से तैयारी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. Obviously that's terribly unfair. So it'll be on one pattern. It'll only have one section. Now how would this work out? वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. But unlike a lot of examinations जहाँ पे 4-5 sections होते हैं, this one would only have one section. And एक ही तरीके से हम इसकी तैयारी करेंगे. So एक ही तरीके से सद के लग के हम इसकी तैयारी करने वाले हैं. So the solution that we have come up with is LE1, which will be a one entrance examination to replace all the entrance examinations. Now, how would this work out? ये पूरा कैसे रहेगा? Now let's move to this. So obviously, the whole theme behind it, the whole dream behind it is that it should be replacing all the entrance examinations which are there in the market right now, right? So students को जितनी problems मैंने अपनी पहली slide में बताई थी, और aim is, और dream is that जब LE1 बहुत फेमस हो जाए, सब लोग उसको लिखने लगे, तो बहुत सारे entrance examinations लिखने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, right? So it's a one law entrance for a lot of, to replace all the law entrances, entry into 150 law schools and counting, and which includes a few national law schools also. It includes pretty much all the private law schools, and it includes a few national law schools also. इसकी पूरी list will be coming up with this Sunday. This Sunday we'll be posting it on YouTube, on our Telegram channel, everywhere that we can post the exhaustive list of all the law schools जो अपने selections, जो अपने admissions LE1 के basis पे लेने वाले हैं, right? उसकी पूरी list ये Sunday आ जाएगी. It'll comprise only of one section. Now, why we are doing this? See, I may be very good in GK, I might not be very good in maths, but it's an honest question जो मुझे अपने आप से पूछना चाहिए, जो मुझे authority से पूछना चाहिए. तो फिर मैथमेटिक्स मेरी टेस्टिंग क्यों हो रही है? जब मैं जीके में बहुत अच्छा हूं, why don't you test me on GK itself? And why mathematics? Why is mathematics even important if I want to go for law as a career? I might be very good with logical reasoning, the critical thinking skills. I may not be very good with legal aptitude. और anyway, मुझे legal aptitude बाद में पढ़ना है. मैं बाद में पढ़ने वाला हूं. मैं law school जाने के बाद में वही तो पढ़ने वाला हूं. तो मुझसे अभी से उसके ऊपर टेस्टिंग क्यों हो रही है? So I should only be tested on what I'm really good with, rather than testing me on anything and everything under the sun. And यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने LE1 में सिर्फ एक सेक्शन रखा है, and you can choose the section that you wish to opt for. उस पर मैं डिटेल्स और आगे दूंगा. So you can choose your section, the section that you are comfortable with, और हम टेस्टिंग सिर्फ उसी सेक्शन के ऊपर करेंगे. So we'll comprise, the one is not just for one examination, the one is for one section also, right? It'll be a centralized admission process. So इधर उधर भागने की एब्सोल्युटली जरूरत नहीं है. इसके थ्रू जितने कॉलेजेस हमें मिलेंगे, सब एक ही जगह पे, एक ही पोर्टल के थ्रू, एक ही जगह पे पूरा की पूरा प्रोसेस खत्म होने वाला है. एंड वहीं से we'll be getting the college of our choice, and we can then directly go to the college and start the law school journey, right? It'll be a completely centralized admission process. Now, certain advanced features of LE1. Number one, unlike a lot of examinations, unlike a lot of offline examinations, जो हमें जून में काफी inconvenience देने वाले हैं, this is a take from anywhere examination. All you'll need is a laptop, a mouse, and if you want an external keyboard, but that is it. All you need is an internet connection along with these things. So it's a take from anywhere examination,
जो बहुत कन्वीनियंट है स्टूडेंट्स के लिए इस एग्जामिनेशन को देना। दैट्स वन। इट बी रिमोटली प्रॉक्टर्ड वाया वेब कैमरा। ऑब्वियसली आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, हमें वैसे पूरा भरोसा है, बट एवरी वंस इन अ वाइल कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। 2020 में हमने कुछ एग्जामिनेशंस में देखा था जो कोविड के बीच में हुए थे, एंड वन एग्जामिनेशन हैड टू बी कैंसिल्ड आल्सो इन फैक्ट। So that is why we'll be extremely cautious. We have used state of the art technology. We have collaborated with a couple of companies जो इस टाइप के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कराती है, एंड पूरा एग्जामिनेशन रिमोटली प्रॉक्टर्ड होगा वाया वेब कैमरा। आप अपना कैमरे को ऑन रखोगे, यू विल बी कंप्लीटली विजिबल while taking the examination, और वहां से we'll be proctoring the LE experts will be proctoring you. Okay, it'll be computerized adaptive testing. I'm sure a lot of you would have heard the term adaptive testing. ये पिछले 10 साल में काफी फेमस हो गया in India, which is test, the complete test itself वो adapt करता है to my needs. So what will happen in this test is the first few questions will be common for all the aspirants. But the next few questions, इसके आगे के जो questions हैं वो सबके अपने अलग अलग होंगे. So depending on how I have attempted, let's say the first 5 questions, मैंने कितने टाइम में अटेम्प्ट किया, मैंने कितने सही करे, मैंने कौन से सही करे, उसके बेसिस पे मुझे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। जो हो सकता है मेरे मेरे साइड में तो कोई नहीं बैठा है, बट लेट्स से कोई और है जिसने वही 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, पर उसके अलग 5 क्वेश्चंस सही थे और अलग 5 क्वेश्चंस गलत थे, उसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस अलग होंगे। So the test itself will adapt to my requirements. The test will adapt to my needs. The test will adapt to my personality. So it's going to be a completely adaptive testing. Again, मैं आपको वापस थीम पे लेके जा रहा हूं। The theme is आप जिस चीज में अच्छे हो, ये उस चीज को टेस्ट करना चाहता है, rather than standardized तरीके से टेस्ट करना 50, 60, 70, 80,000 aspirants को, right? So that is why we've used a adaptive testing approach यहाँ पे. We'll be having a demo on all these things in the coming weeks. It's machine learning enabled. So LEOne will keep learning about the test takers. Machine learning, I'm sure काफी लोगों ने सुना होगा. A lot of personal assistants actually machine learning पे चलते हैं. I'm sure अपने फोन में देखा होगा Siri या Google Assistant, शुरू में वो उतना नहीं सुनता आपकी, बट धीरे धीरे करके वो आपको समझने लगता है, आपकी आवाज को समझने लगता है, आपकी आवाज की वेरिएशंस को समझने लगता है, एंड देन वो आपकी ज्यादा अच्छे से सुनता है। सो यहां पर भी इट्स मशीन लर्निंग एनेबल्ड, विच मींस जैसे जैसे आप टेस्ट अपना पूरा कंप्लीट करते जाओगे, बैक एंड पे आपका एक पूरा प्रोफाइल बनता जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस दैट यू हैव सॉल्व्ड, जो सही हुए, जो गलत हुए, जितना टाइम लिया, कौन से क्वेश्चन पे टाइम लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दैट प्रोफाइल विल बी यूज्ड for admissions in the colleges later, right? So the whole test is machine learning enabled. It's also artificial intelligence enabled for the obvious reason कि आपके facial expressions and your body movements इन सब के ऊपर यहाँ पे check रखा जाएगा, for obvious reasons, because we want to ensure कि the whole paper is 100% cheating free, and that is why artificial intelligence के मदद से हम पूरा check रखने वाले हैं on each and every aspirant. डीप लर्निंग एनेबल्ड, एज आई सेड, यहां पे हम ये नहीं चेक करना चाहते हैं कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ योर लर्निंग, आप कितनी सारी चीजों के बारे में क्या जानते हो। हम ये देखना चाहते हैं आप जिसके बारे में जानते हो, आप उसके बारे में क्या डेप्थ में जानते हो, राइट? सो व्हाट एवर दैट यू नो अबाउट, आपको उसकी क्या कितनी डेप्थ पता है, एंड दैट इज वाई हमने यहाँ पे डीप लर्निंग भी एनेबल करके रखा है। शुड ऑल्सो चेक द डेप्थ ऑफ योर लर्निंग. The whole test will be held on the LETR blockchain. पिछले कुछ महीनों से I'm sure कुछ लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी करा होगा. The whole cryptocurrency theme, it works on blockchain, right? And blockchain क्या होता है कि हर person या blockchain is basically comprises, it's a chain of a lot of blocks. और वो ब्लॉक में एक बार कोई डेटा चले जाता है, it gets packed. आपके टेस्ट के साथ भी exactly यही होगा. So the whole test will run on the legal edge top rankers ब्लॉकचेन, और उस ब्लॉकचेन पे जब एक बार टेस्ट रजिस्टर हो जाएगा, उसके साथ कोई टिंकरिंग नहीं हो सकती है, उसके साथ कोई चेंज नहीं हो सकता है. सो वी कैन एब्सोल्युटली वाउच फॉर इट दैट इट्स 100% चीटिंग फ्री पेपर. इट्स नॉट पॉसिबल, एंड
and we can absolutely vouch for it because of all the technologies that we have used. It's 100% cheating free paper, even though बच्चे इसको घर से देने वाले हैं, right? So that is one. And yes, we are extremely strict about it that only fully vaccinated aspirants can take it. So if you have not completed your vaccination yet, please, जब तक ये टेस्ट होगा, जब तक एप्लीकेशन फॉर्म्स आप भरोगे इस टेस्ट के, you have to get your vaccination completed. So अगर सिंगल वैक्सीनेटेड हो, डबल वैक्सीनेटेड हो जाओ, नहीं वैक्सीनेटेड हो, प्लीज दोनों वैक्सीनेशन कर लो. समहाउ अगर आप एंटी वैक्सर हो तो अपने करियर के लिए प्लीज प्रो वैक्सर बन जाओ, एंड बट डू गेट द वैक्सीनेशन डन. The final vaccination certificate is something that we'll be checking while you'll be filling up the application form. So we'll only be allowing fully vaccinated aspirants to write this test, and we'll be very strict about it. Important dates. So finalization of pattern and centers, because we are slightly late. बहुत सारी चीजें थी जिसको हमें implement करने में थोड़ा सा टाइम लग गया. So we are slightly late in announcing this. That is why यहाँ से हमारे पास comparatively कम टाइम है. So परसों हम लोग अनाउंस करने वाले हैं the list of centers and the pattern of this. Now आज से लेके परसों तक there is something which I need you guys to do that I'll tell in the next slide itself. But परसों उस basis पे we'll be announcing the pattern and the list of centers of this. Registration opens 6th of April. Registration closes 15th of April. So it'll only be open for exact 9 days. Admit card would be out of LEOne by 28th of April. It'll be held on 12th of June. The examination will be held after your board examination. शायद हो सकता है कोई एक दो examination बचे, but it's anyway a take from home examination. You can very well take it from home because it's a take from home examination. So it doesn't matter अगर उसके अगले दिन कोई एग्जाम भी है, आप इसको आराम से लिख सकते हो एक दिन पहले. And the result would be announced, and that's the beauty of it, that the result would be announced in just 3 days. So even before writing the prominent law entrance examinations, you would know कि इसके थ्रू मुझे मेरा क्या स्कोर है, मेरी ऑल इंडिया रैंक क्या है, और मुझे इसके थ्रू कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं. So you'll have absolute clarity on everything. जो अभी बहुत बार मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि एक एग्जामिनेशन में जब तक रिजल्ट नहीं आया या एग्जामिनेशन नहीं हुआ तब तक दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया. अब वो बोल रहे हैं फीस भरो और रिफंड नहीं हो गया, एंड वी आर जस्ट कंफ्यूज्ड अमंग्स दीस थिंग्स. सो दिस इन अ वे इज अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. सो जून 15 तक LE1 का रिजल्ट भी आ जाएगा, राइट? द फीस विल, एंड दैट्स अनदर ब्यूटी ऑफ इट, दैट इज द फीस विल जस्ट बी 499 rupees for the first 100 applicants. जब हम एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे, it'll just be 499 rupees for the first 100 applicants. And उसके बाद again it is still around 50% or even less as compared to other prominent law entrances जिसके थ्रू हमें handful of colleges मिलते हैं. यहाँ पे you'll be getting over 150 200 colleges. It's 150 right now, but वो list हम add करते जा रहे हैं. Getting over 150 colleges, and the application form fees would just be 1499 after the first 100 applicants, right? Now, what do you guys need to do? Now, this one request, एक चीज जो मैं चाहता हूं आप लोगों के साइड से, that is, there are two things that we'll be announcing day after tomorrow. That is, in fact, after 3 days, that is on Sunday. So, I want you guys to, if you are interested in writing LE1, मैं चाहता हूं आप नीचे comments में अपना नाम, that is one, which city you belong to. Now, why do we need your city? The reason is very simple. Even though it's a take from home examination or take from anywhere examination, the kind of technologies which we're using in it, uska hardware infrastructure we have to get readied in that city. And that takes time. So we'll be finalizing a list of close to 100 to 150 cities जहां पे हो सकता है, पर कहीं पे अगर हमें बहुत कम एप्लीकेंट्स मिले, we might not be able to conduct the test in that city. So yes, आपको देना घर से है, but we have to finalize the hardware requirements of that city. And that is why what I want you guys to do is write your complete name, write your city name in the comment box below, and number 3, because there is only one section, so I want you guys to write your preferred section. अगर वो 5 में से एक सेक्शन जो आपका एब्सोल्यूट फेवरेट सेक्शन है, द सेक्शन दैट यू आर एब्सोल्युटली इन लव विद, एंड यू थिंक दैट उस सेक्शन का अगर डेप्थ चेक किया जाएगा इन द LE1 एग्जामिनेशन, आप डेफिनेटली फोड़ दोगे. अगर ऐसा है तो प्लीज ये डिटेल्स आई वांट यू गाइस टू राइट एज सून एज पॉसिबल,
We'll be finalizing the list by end of day tomorrow or by day after tomorrow, and final details हम लोग संडे और सैटरडे वो बता देंगे हम लोग 2 दिन के अंदर वो हम रिलीज करने वाले हैं. So in the comment box, just after the YouTube live, your complete name, your city, and your favorite section, the section that you would prefer कि इस examination में हो. This is something which I need from you guys, और उसके basis पे we'll be finalizing the list of centers and the sections, total sections of LE1. Right? I think that is it from my side. This is one of the biggest updates जो हमने पिछले कुछ महीनों में at least किया है. We are really pepped up about this. The whole team worked day and night for this since the last many months. और बहुत मुश्किल था इसको completely under the hood रखना. बहुत मुश्किल था इसको completely छुपा के रखना सब लोगों से. But today we are proudly announcing this. And in the next few weeks, आप इन सब LE1 के around बहुत updates देखोगे. आप लिस्ट ऑफ सेंटर्स देखोगे, आप डेमोन्स्ट्रेशंस देखोगे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज देखोगे, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है. We'll be coming up with a lot of YouTube lives around this in the next few weeks. So hope this was an equally exciting news for you guys also. If it was, do press the like button, do subscribe to the Legal Ed channel. You know the drill, and and do let me know in the comment अगर if there's anything else that you want us to include in LE1. So जो डिटेल्स मैंने बताई, अपना ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर ये सब मत देना, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बट योर नेम, योर प्रेफर्ड सेक्शन एंड योर सिटी, that is it. That is something that we need. And if there's anything else that you want us to include in LE1, we are all ears. We are just developing this test, but we want to develop this test as one law entrance to replace all law entrances. So hope we are successful in that. So thank you so much, guys. Take care. I'll see you guys very soon. And don't forget to write the details in the comment box below. Thank you so much. Take care and bye.